Good morning, all. Today we are going to talk about right to education. We are going to talk about Article 21A. We will be also talking about two very important cases to this particular article. That is Mohini Jain versus State of Karnataka and Unni Krishnan versus State of Andhra Pradesh. We will be talking about certain historical background that led to development of Article 21 capital A. So this was not, Article 21A was not in the Indian Constitution from the commencement of the Constitution. It was added later on through the amendment. So we'll be talking about whole of this in this particular session. So let me begin with Article 21A. What is Article 21A? So Article 21A is about right to education. This says that the state shall provide free and compulsory education to all children of 6 to 14 years in such manner as the state may by law determine. So the meaning that is conferred from Article 21 capital A is that it gives a duty or an obligation on the state, that it is a duty of the state to provide education to all the children from the age group 6 to 14 years. Now I have a question, that whether state is obliged to give education, give primary education or elementary education through this RTE, that is 21A. What do you think is the duty of state, to give primary education or elementary education? So Aditi says that it is the duty of state to provide primary education. Okay, so but I would slightly like to disagree on this, because in certain books you will find primary education and in certain books you will find elementary education. Now suppose there might be a person who is 14-year-old and he may be studying in standard second only, and there might be at the same point of time case that a boy is in 14-year-old boy is studying in class 8th. So it is neither a provision for primary education or elementary education, it is for all the children in the age group 6 to 14 years. आप primary और elementary word use करके confuse मत होइएगा यहाँ. It just matter कि वो जो particular children है उसका age group क्या होना चाहिए, 6 से लेके 14 years तक होना चाहिए. तो all the students or all the children of this particular age group are eligible to have free and compulsory education provided by the state. अब बड़ा interesting सा point है यहाँ, free and compulsory two words used है. Now free कौन देगा? Who is going to give free education? Kindly reply in chat. Who is going to give free education to the children? Who is obliged to give free education? Swati says state. Very good, Swati, you are right. Ekta says state. Yes, state. Someone is asking for sharing me ID password. I am sharing. So the state is saying it is on the state. The state has to provide free education. Everyone is right. And who is, ये compulsory education की भी बात है. So who is there obliged to give compulsory education? Free education will be provided by the state. I agree to that. But who will provide compulsory education? I'm waiting for the reply. Again, someone is saying state ही करेगा ना. नहीं, state नहीं करेगा. This is wrong. That is why I was talking about this very small issue. Parents, yes, Jyoti is absolutely correct. Parents, Ujjwal is also right. So यहाँ जो दो word free और compulsory अलग-अलग इसलिए use किया गया because both of them has different meanings. They don't want that state should, अगर सिर्फ state ही करता तो they should only have to use the word free. They should not have to use the word compulsory. Now let me show you कि compulsory education parents पे कैसे है, इसकी हमें आगे पता चलेगा. You see, this Article 21A was added by 86th Constitutional Amendment in 2002, which says that the state is bound to give free education. In that very amendment, the government, the parliament also enacted 51A. What is 51A? Fundamental duties. In 51A, they added a clause K. In that particular clause, it made an obligation or the duty of the parents to send their children to the school. अब जो state है वो school आपके घर पे तो नहीं ले आएगा. State cannot be forced to bring school in your home. You must send your children to the school so that they can get the education. So for that very purpose, the Parliament of India enacted and made an amendment in the provisions of fundamental duty and added clause K, which says that it is a compulsory duty of the parents. हम आगे पढ़ते हैं क्या है. 51A, who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child
or as the case may be, between 6 to 14 years. Now you see the age group is 6 to 14 years here also. 51A में भी age group वही लिखा है जो age group 21A में लिखा है. Means the intention of the parliament was very clear. They wanted to educate the children from age group 6 to 14, and the duty of giving free education was on state, and the duty of providing compulsory education means ultimately it's the parent who are going to send their children ना. स्कूल स्टेट 500 स्कूल खोल ले, क्या फर्क पड़ता है अगर वहां बच्चे ही नहीं आ पाएंगे तो इट इज irrelevant. So the parliament thought that we should provide a duty, we should give a duty to parents also, that it's a fundamental duty that you send your children to the school. अच्छा लग रहा है सुन के, मजा आ रहा है, बट ऐसा इतने आसानी से हमें ये सब मिला नहीं. इट वॉज अ वेरी लॉन्ग बैटल कि हम यहाँ तक आए. वी गॉट द राइट टू एजुकेशन, बट इट वॉज नॉट नेवर सो इजी. स्टेट को भी ऐसा करना पड़ा क्योंकि स्टेट की भी मजबूरी आ गई थी. अदरवाइज यू नो द पार्लियामेंटेरियंस हाउ मच दे आर कंसर्न्ड अबाउट अस. सो लेट मी शो यू कि क्या हुआ. बहुत इंटरेस्टिंग केसेस हुए. RT एक्ट आ गया इसके बाद, एंड ऑल्सो देयर इज अ राइट टू एजुकेशन एक्ट व्हिच enables the state to give education to the poor. Right to Education Act was enacted in 2009 and it became enforced on 2010. It explains the provision. अब देखिए 21A क्या है. 21A talks about a provision. वो तो एक provision बता रहा है, enabling provision है कि this is the duty of the state. State को ऐसा करना है. But how? What is the manner of doing that? That is prescribed in RTE Act 2009. RTE stands for Right to Education. So it is given in Right to Education. So I will be talking about the implications of right to education. In the later part, we will deal with that. But before that, let me move further. Okay, so let's talk about the historical chronology, that how do we came to this article 21. How did it got evolved? ऐसे अपने आप तो आए नहीं. As I told you, it is 21A was added by 86th Constitutional Amendment 2002. At the time of commencement of the Constitution, that is 26 January 1950, there was no provision of right to education. But what happened that the parliamentarian have to bought this amendment. So let's start from the very beginning. Let's start from the commencement of the Constitution. So at the time of commencement of the Constitution, there was an article 45. Article 45 will come in which part of the Constitution? If you know, then please reply in the chat box. So Article 45 said that it talked about the provision for free and compulsory education. It said that the children, now you see age group. Here is the age group mentioned, all children until they complete the age of 14 years. So ultimately it talks about 14 years. Yes, लोगों ने मुझे DPSP answer किया. You are right. 45, Article 45 is in the DPSP. That is the part 4 of the Constitution. And we know by the provision of Article 37, DPSPs cannot be enforced. You cannot go to the court and say that there is a right given to me in a DPSP and I want it to be enforced. So DPSP enforced नहीं हो सकता, ये आपको पता है. Part 4 में जो भी provisions है, that cannot be enforced. So 45 में provision था. There was a provision of education, of compulsory and free education in our Constitution in Part 4, which is in Article 45, which says that the state shall endeavor to provide within a period of 10 years from the commencement of this Constitution for free and compulsory education. So the concept of free and compulsory education was given under Article 45, which was in DPSP, but it was not enforceable. So it didn't matter to state that whether there is some provision which deals with it. The state was not very much bothered about it because it came under the provision of DPSP and it was not enforceable. Now, what happened? After 45, it was said that within the in the Constituent Assembly debate, it was discussed that within the 10 year of the commencement of the Constitution, we will provide 100% literacy in India. The 100% literacy कर देंगे, literacy rate will reach 100% in India, but it was not possible. ऐसा हो नहीं पाया. So for that very purpose, what happened that हमने क्या किया? In the year 1968, a first National Commission for Education was established. ये लोगों को नहीं पता होता तो नोट कर सकते हैं आप, that first National Commission for Education was established under the supervision of Dr. Kothari. And there were certain guidelines and suggestions given to the state. It said that the science and mathematics should be a basic subjects that should be taught to everyone. This commission also said that there should be same syllabus for boys and girls. ऐसा नहीं कि girls को आप सिर्फ ऐसी education दे रहे हो जैसे कि
कुकिंग क्लासेस हो रही है गर्ल्स के लिए और बॉयज को आप मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हो, सो देयर शुड नॉट बी प्रोविजन लाइक दिस. देयर शुड बी द सेम सब्जेक्ट्स व्हिच विल बी टॉट टू बॉयज एज वेल एज गर्ल्स. Also, this said that the school, that there can be one single school for boys and girls also. That is the co-ed school, the concept of co-ed school. So Dr. Kothari's commission, that is First National Commission for Education, laid these guidelines in front of the state, in front of the parliament. In 1976, what happened? Education was shifted to concurrent list. You know what is concurrent list? In concurrent subjects which are in concurrent list are dealt by state as well as union. आपको पता है CBSE is a board, Central Board for Secondary Education, and you also know at the same time there is UP board, there is Bihar board, there is Maharashtra board, there is Punjab board. तो स्टेट गवर्नमेंट की अपनी एजुकेशन बोर्ड भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी अपनी एजुकेशन बोर्ड है. Because this is because if you will think that education is a subject which was shifted to concurrent list in 1976. So being a subject of concurrent list, it has been dealt by both state as well as center or union. Now, ये सब तो नॉर्मल प्रोविजंस थे, सजेशंस थे, कमीशन थे, ये तो आते रहते थे. बट व्हाट कंपेल्ड द पार्लियामेंट टू डू दिस वाज टू मेजर केस. First was Mohini Jain case. Mohini Jain versus State of Karnataka. This is a landmark case. Although the bench was a small bench, but it is a landmark case because first time in Indian history, or first time in the history of Indian judiciary, it was laid that right to education is a fundamental right. So kindly note down that the first case in which it was held was Mohini Jain versus State of Karnataka. Now what happened? Mohini Jain was a student in Karnataka Medical College, in a private medical college. So she was studying in a private medical college. So what happened? There was a capitation fees charged on her. 25% of seats were reserved for government quota, in which there were seats for, you see, OBC, SC, ST, and people belonging to Karnataka only. And for other 75% students, the fees was comparatively higher because they were not on the government quota seat, and it was their fees was higher as compared to the rest of 25%. So Mohini Jain was one of those students because she didn't belong to any reserved category, neither does she belong to Karnataka. So she had to pay comparatively much bigger fees or much greater fees. So she challenged this on the court, saying that they are violating my fundamental right, and that fundamental right is right to education. So it was taken up in the court that whether right to education is a fundamental right. It was discussed. So the court said, earlier we have held that under the Article 21, that is right to life, we have the right to live with dignity. Dignified life is a part of Article 21. It was said earlier. वो पहले केसेस में ये बात लेट डाउन कर दी गई थी कि right to live with dignity is part of Article 21. That is right to life. So the court said that what does a dignified life constitute? कोई बंदा dignified life कैसे रख सकता है? तो अगर मैं उसका ingredients देखूं तो dignified life का एक ingredients education भी होता है. Education will also be a part of dignified life. So the court said, in order to provide dignified life, we must provide education. So the court said there's a direct link between dignity and education. The court established a direct link between dignity and education. So the court said, because dignified life is protected under Article 21, so education, which is very necessary for dignified life, so education is also protected under Article 21, and the court held that under right to life, you have right to education. So it was very first held in the Mohini Jain versus State of Karnataka. It was in the year 1992. And the court said that this capitation fees, this case is also known as capitation fees case. So the court held that this capitation fees cannot be taken by the state. It is very wrong on the part of the private medical colleges also. You know, the fees of medical colleges are too much high. बहुत ज़्यादा fees होती है medical colleges की, private medical colleges की. That is why people are बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं in order to get a seat in government medical college, because there are certain reasons, क्योंकि वहाँ पे expenditure इतना होता ही है, the education of a doctor is costly. So in that particular case, कोर्ट ने एक बड़ा गजब का स्टैंड लिया और बहुत ही जुडिशियल एक्टिविज्म जिसको आप कहते हैं, तो कोर्ट ने कहा कि इवन हायर एजुकेशन में भी इट इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोवाइड हायर एजुकेशन ऑल्सो. जैसे ये बात कोर्ट ने कही, सुप्रीम कोर्ट ने, नाउ यू नो अंडर द प्रोविजन ऑफ 141, when Supreme Court laid down certain things, it becomes a law. तो कोर्ट ने कहा आपको हायर एजुकेशन भी लेना है. ये बात सुनते ही द कर्नाटका गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, आंध्र गवर्नमेंट, they were all like, what to do now? If it comes on the state that you have to provide education to everyone, even higher education, so from where will we get this much amount of money? We don't have so much of resources. We are not financially that much sound that we can provide everyone higher education. So it became a matter of concern. So they brought a bill.
in order to contradict everything, they brought a bill. And the bill was challenged, and later on a case in the next year itself, there was another important case, Unni Krishna versus State of Andhra Pradesh. Now, question आता है बहुत बार कि by which case it was laid down that right to education is a fundamental right. When you have option of Mohini Jain and Unni Krishna, do select Mohini Jain, because Mohini Jain was a older case and it was the very first case. It was the pioneer case which established that right to education is a fundamental right. But generally जब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो वो मोहिनी जैन का ऑप्शन देते ही नहीं है, वो उन्नी कृष्णन का आंसर देते हैं और उन्नी कृष्णन सही आंसर होता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि इन उन्नी कृष्णन केस, the same case, Mohini Jain case, was the validity of Mohini Jain was challenged and it was discussed in this case, and the bench was comparatively bigger. So Unni Krishnan ne bhi kaha, and in this case the court held that yes, Mohini Jain judgment was correct and we agree that right to education is a fundamental right. So in questions where there are both the option, select Mohini Jain, and in questions where you have Unni Krishnan, select Unni Krishnan. तो आपको मैंने बता दिया उन्नी कृष्णन जो है वो उन्होंने वैलिडिटी देखी इसकी. तो जब दोनों ऑप्शन हो तो मोहिनी जैन टिक करिए, क्योंकि मोहिनी जैन एक पुराना केस था, सबसे पहले मोहिनी जैन में ये बात कही गई. और अगर दोनों में से कोई एक ऑप्शन है तो कोई एक तो चूज करना ही है, क्योंकि दोनों में ही ये बात कही गई है. तो ठीक है. तो उन्नी कृष्णन में क्या हुआ, कोर्ट ने वैलिडिटी चेक करी ऑफ राइट टू एजुकेशन दैट वाज हेल्ड इन मोहिनी जैन केस. अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब प्रोविजन नहीं लिखा हुआ था. इट इज ईयर 1992 एंड नाउ 1993 उन्नी कृष्णन. सो द कोर्ट सेड, बट इस केस में कोर्ट का बड़ा नैरो अप्रोच था. मतलब जब कोर्ट ने देखा कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो परेशान हो गई है, तो कोर्ट ने एक नैरो अप्रोच ले लिया एज कंपेयर टू मोहिनी जैन. अगर ऑप्शन ना हो तो डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए, फिर क्या करेंगे. सो अगर अब आप सोचिए कि स्टेट गवर्नमेंट परेशान हुई कि हायर एजुकेशन देना है, प्रोफेशनल डिग्री देनी है ऑन आवर ओन रिसोर्सेज, सो व्हाट कैन वी डू. अगर आप ऑप्शन ना हो, आपको खुद लिखना हो, तो मोहिनी जैन लिखिएगा. सो द कोर्ट सेड, उन्नी कृष्णन में कोर्ट ने क्या कहा कि द राइट ऑफ एजुकेशन is a fundamental right protected under Article 21. There is no doubt and no dispute in this. The court said, but we need to look at the scope of right to education. कि right to education कितना. उन्होंने कहा, for that we need to study Article 45 and Article 41. Now अगर आप Article 45 पे मैं आपको जल्दी से वापस लेके जाऊं, तो आपको पता चलेगा Article 45 पे क्या लिखा था. Article 41 यहाँ लिखा हुआ है कि state shall within the limits of its economic development make effective provision for securing right to work to education. मैं 45 नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी 41 पढ़ा रहा हूँ. शायद 45 मैंने स्लाइड में लिखा नहीं है, मैं भूल गया हूँ शायद 45 लिखना. तो अगर मैं 45 बताऊं तो 45 में what is mentioned in Article 45, Article 45 talks of giving compulsory, ये है तो या. So Article 45 talks about giving compulsory education to the age group. यहाँ आप age group देखिए 45 में. उन्नी कृष्णन केस में कोर्ट ने कहा कि आप राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट, बट वो फंडामेंटल राइट का स्कोप आप पता करेंगे थ्रू 45 एंड 41. 45 क्या कहता है कि कंपलसरी एजुकेशन देनी है, बट इट प्रिस्क्राइब्स अ एज ग्रुप. इट सेज दैट एज ग्रुप ऑफ 6 टू एज ग्रुप टिल 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन. मतलब किसी व्यक्ति का जब तक उम्र 14 साल होता है तब तक का ही एजुकेशन, फ्री एजुकेशन होना चाहिए. दैट विल बी कंसिडर्ड फंडामेंटल राइट, कोर्ट ने ये कहा. लेकिन अगर आप मोहिनी जैन में जाएं तो मोहिनी जैन केस कोर्ट सेड दैट इवन हायर एजुकेशन इज अ कंपल्शन ऑन द स्टेट, that they should provide a higher education. But in Unni Krishnan case, the court held a smaller, narrow view, and the court said कि अगर हम constitutional maker का mind पढ़ना चाहें तो हमें 45 पढ़ना चाहिए, क्योंकि court very well wanted to make this provision narrow. क्योंकि इतना बड़ा provision, it would have become unjust on the state कि आप सबको ही secondary education free of cost में दो. It would be very unjust on the state government because financial resources are limited. We don't have unlimited financial resources. So in Unni Krishnan said, court said कि 45 and 41 आर्टिकल को साथ पढ़ना पड़ेगा. 45 क्या कहता है कि 14 इयर्स तक की एज तक ही हमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देनी है. और 41 क्या कहता है, 41 कहता है अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें कहेगा सेकेंड लाइन, वेरी द सेकेंड लाइन से स्टेट शेल विद इन द लिमिट्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी. मतलब कि इकोनॉमिक कैपेसिटी का गौर करना पड़ेगा. यू हैव टू कंसीडर द इकोनॉमिक कैपेसिटी ऑफ द स्टेट. You cannot say that everyone is eligible to do PhD. You will provide every kind of education. How much you want to study, the state is bound to give you this, provide all the resources. So it was said in Unni Krishnan case that we must, in order to get the scope of
determining the scope and parameter of the fundamental right of education, we must read 45 and 41 simultaneously. So from 45, they took the element of 14 years of education, and from 41, they took the element of limited financial resources. So they said that in this country, everyone has right to free education, but till the age of 14 years. After that, the state should endeavor to provide the education, but it is not a compulsion on the state due to limited इकोनॉमिक रिसोर्सेज. जितनी इकोनॉमिक कैपेसिटी उस हिसाब से स्टेट प्रोवाइड कराए, बट कंपल्शन नहीं होगा. उन्नी कृष्णन का केस समझ आया. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस. इन दिस वेरी केस द कोर्ट सेड, द कोर्ट ने कम कर दिया उसका जो स्कोप मोहिनी जैन ने बड़ा किया था, उस स्कोप को उन्नी कृष्णन केस में कम कर दिया गया. और अगर आप देखें तो इस केस में कह दिया गया, लेकिन क्या 14 ईयर तक तो इट इज वेरी मच फंडामेंटल, दैट यस right to education is fundamental part and it is covered under article 21 of the Indian constitution. अब इससे क्या हो गया इस केस से, that DPSP 45, that is directive principle, which was article 45, became a fundamental right. मतलब it is still in the provisions of DPSP but it is enforceable. अब तो ये provision enforceable हो गया because the court held by Unni Krishnan that now it is compulsory to the state that they should provide education till 14 years of the age. Now due to this judgment, this आर्टिकल 45 became one of our fundamental rights. बाद में जाके पार्लियामेंट ने एक्सप्लिसिटली आर्टिकल 21A लिख दिया, तो अब हम उसको फंडामेंटल राइट बोलते हैं, बट उस समय तो आर्टिकल 21A था नहीं. सो बाय दैट, इंस्टेड बीइंग इन द डोमेन ऑफ DPSP, 45 became enforceable. Why did it become enforceable? Because in the Unni Krishnan case, the courts held that it is necessary to provide education till the age of 14 years. सो इट बिकेम इन्फोर्सेबल. अब आप वहां कोर्ट में जाके ये अपने राइट इन्फोर्स कर सकते हो कि सर मुझे एजुकेशन नहीं मिल रही. क्यों? क्योंकि बिकॉज इट हैज बीन सेड इन दैट पर्टिकुलर उन्नी कृष्णन केस दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट. ठीक है. सो दिस वाज हेल्ड इन उन्नी कृष्णन केस. अब उन्नी कृष्णन केस हो गया. नाउ बाय उन्नी कृष्णन केस द स्टेट गवर्नमेंट्स वर सेव्ड. जो स्टेट गवर्नमेंट पे ओवर बर्डन आ गई थी वो बच गई. बट देयर वाज अ ड्यूटी आल्सो लेड ऑन द स्टेट गवर्नमेंट दैट नाउ इट इज कंपल्सरी दैट यू प्रोवाइड एजुकेशन टू द 14 इयर्स ऑफ चाइल्ड. उसके बाद कोर्ट ने कहा ओके, द स्टेट सेड ओके, नाउ वी विल टेक सम एक्शन. सो इन 2002 द पार्लियामेंट बॉट 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. बाय दैट एक्ट आर्टिकल 21A वाज एडेड व्हिच laid down an obligation on the state to provide free and compulsory education till the age of 14 years, and a fundamental duty on the part of parents that it is the duty of the parents to send their children to the school. In 2005 there was a Central Advisory Education Board committee which gives its guideline कि कैसे करना है, क्या करना है. ये तो 2002 में बता दिया, कैसे करना है 2005 की इस कमिटी ने बताया कि ओके वी विल हैव अ राइट टू एजुकेशन एक्ट. उस एक्ट में ऐसे ऐसे प्रोविजंस होने चाहिए. सो इन 2009 वी द पार्लियामेंट पास्ड राइट टू एजुकेशन एक्ट, RTE एक्ट कहते हैं जिसको हम कॉमनली. और 1 अप्रैल 2010 में ये एक्ट क्या हो गया, इंप्लीमेंट हो गया. नाउ इट बिकेम इनफोर्स्ड. अब इसके बाद क्या हो, लेकिन मैं अभी भी सोचता हूँ कि मोहिनी जैन सपोजिटली अगर उन्नी कृष्णन ने मोहिनी जैन का स्कोप नैरो नहीं किया होता तो सोचिए अभी हम नॉर्वे और डेनमार्क जैसी कंट्री होते हैं. बिकॉज यू नो द हायर एजुकेशन इज फ्री ऑफ कॉस्ट इन नॉर्वे एंड डेनमार्क, एंड आई थिंक दैट इट इज वन ऑफ द कंपोनेंट बिकॉज ऑफ विच दे आर वन ऑफ द मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. हैप्पीनेस इंडेक्स में हमेशा नॉर्वे और डेनमार्क, आई फाइंड सच अ स्मॉल कंट्री आर नॉर्वे, डेनमार्क, एंड दे आर ऑलवेज इन टॉप 5. सो दीज थिंग्स आर, but we must also think about the financial resources and limitations of the country. We can't just dream of an ideal state every time. So yeah, recently आज मैंने स्टेटस लगाया था, took 8 years in implementation. वो तो आप सही कह रहे हो, लेकिन आप ये सोचो when it was said in 1950 itself, कॉन्स्टिट्यूशन में 1950 में ही लिख दिया, 1992 में जाके केस, और 42 years तो वैसे ही लग गए. It was a duty on the state ना to provide. So you कितना ज़्यादा टाइम, even first committee 1968 में बनी, मतलब even after 18 years you try to think about it. Okay, we have to provide compulsory education too. So this was the situation of our parliament. But ये तो हर ही केस में होता है, there is nothing new. In every case we come to know the bad intentions of the parliament. So CABE की कमिटी बनी, उन्होंने RTE बताई और RTE इनैक्ट हो गया. Now what was the effect of RTE? RTE ने बहुत गजब के इफेक्ट दिए, जो आज आप देखते हो, जो आपको बहुत सारी चीजें पता है जो आपके साथ हो रही है, बट यू डोंट नो दैट व्हाट इज द लीगल प्रोविजन बैकिंग दैट. सपोजिटली आपको पता है टिल क्लास 8 नो वन कैन बी फेल्ड. आपको पता है 8th क्लास तक बच्चे फेल नहीं होते. इन क्लास 9th दे कैन बी फेल्ड, बट टिल क्लास 8 दे कैन नॉट बी फेल्ड. क्यों? बिकॉज दे हैव अ फंडामेंटल राइट ऑफ एजुकेशन.
And RTE Act, that this RTE Act provides that no one can be failed before class 8. Class 8 तक आप किसी को फेल नहीं कर सकते. You have to promote everyone. उसके बाद secondly, no interview of parents and children. अब आप देखिए, पेरेंट्स और चिल्ड्रन का इंटरव्यू नहीं ले सकते. आपको मैं बताऊं, अगर बहुत सारी मूवीज देखते हैं हम, उसमें पेरेंट्स का इंटरव्यू ले रहे हैं. सपोजिटली जो पेरेंट है वो बहुत वीक, फाइनेंशियली वीक है या लेस एजुकेटेड है, तो चिल्ड्रन की भी एडमिशन नहीं लेते, कहते हैं कि नहीं लेंगे. तो इस चीजों को हटाने, दिस वाज रियल फैक्ट. मतलब ये होता था कि पेरेंट क्या करते हैं, अच्छा पेरेंट अगर इसके गरीब हैं तो बच्चे को भी नहीं एडमिशन लेते थे, या पेरेंट इलिटरेट हैं तो बच्चों की एडमिशन भी सम हाई फाई स्कूल्स, so I won't name them. So these kind of schools, they used to practice this kind of things. So it was prohibited by RTE Act only कि अब ये जो इंटरव्यू का स्कीम है, parents cannot be interviewed if you want to admit or take admission of any children. Even a child cannot be solely interviewed. मतलब सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे आप एडमिशन नहीं ले सकते स्कूल में. क्या इंटरव्यू ले रहे हैं बच्चे को, आप वो देख रहे हैं. मतलब ये क्यों लाया गया? The provision was that you want to judge a children on his economic capacities. कोर्ट ने ये भी मना कर दिया. अगर आप ऐसा करते हैं, देयर इज अ पेनल्टी. चिल्ड्रन की इंटरव्यू लेने पे 25,000, पेरेंट की इंटरव्यू लेने पे 50,000 अकॉर्डिंग टू आरटीई एक्ट 2009. और हर स्कूल में 25% सीट रिजर्व कर दी गई, इवन इन प्राइवेट स्कूल. कि गवर्नमेंट में तो चलिए वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है ही, तो उसमें रिजर्वेशन की तो क्या ही बात. पुअर के लिए, क्योंकि उसमें तो जब पेमेंट ही नहीं लगनी है तो पुअर रिच हर कोई भी आ सकता है. इन प्राइवेट स्कूल दे रिजर्व 25% सीट्स फॉर पुअर्स. उन्होंने कहा कि अब प्राइवेट स्कूल में भी पुअर जो लोग हैं, जो लोग गरीब हैं, जो इकोनॉमिकली वेल ऑफ नहीं है, उनको भी प्राइवेट स्कूल क्या देगी, एजुकेशन प्रोवाइड करेगी अंडर दिस आरटीई स्कीम. तो इट वाज हेल्ड इन बाय आरटीई स्कीम. तो ये इतनी फंडामेंटल जो डेवलपमेंट हुई है, ये आरटीई स्कीम के कारण हुई है. और टू द बट मैं कहूँ तो मेरे हिसाब से तो ड्यू टू दिस मोहिनी जैन केस, दिस वाज अ पाथ ब्रेकिंग केस, जिसके कारण इतना कुछ हो पाया. उससे पहले भी कुछ चीजें चल रही थी, बट यू कैन सी द टाइम पीरियड कि कितने धीरे धीरे आज जो पार्लियामेंट वाला 1968 में एक कमीशन बैठती है, फिर उसके 8 साल बाद कमीशन के बाद एक वो एजुकेशन को लिस्ट से हटाते हैं, फिर 1992 में जाके मोहिनी जैन के केस को रिजॉल्व होता है. So it took so much of period of time, but at least at the end of the day, today we have this provision of Article 21A. So everybody knows that there is Article 21A, but no one knows the struggle, and no one knows कि कैसे धीरे धीरे चल के हम यहाँ तक पहुँचे. So this was all about Article 21A. I am not going to discuss Article 22 today क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने सजेस्ट कर दिया है, सर आप ज़्यादा कवर करते हो एक दिन में, आराम से थोड़ा थोड़ा, ताकि हम भी उसको रिवाइज कर पाएँ. सो आप ये 2 केस जाके पढ़िएगा. जजमेंट बड़ी है, बट पढ़िएगा. उन्नी कृष्णन में एक नैरो अप्रोच था कोर्ट का एज कम्पेयर टू मोहिनी जैन, बट उन्नी कृष्णन ने भी कोर्ट ने लेट डाउन किया कि इट इज अ राइट टू फंडामेंटल राइट. तो आप दोनों, जब आप सब्जेक्टिव आंसर लिख रहे हैं, सपोज करिए आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो उस टाइम तो आप दोनों केस को मेंशन कर सकते हैं. इन मोहिनी जैन एज वेल एज उन्नी कृष्णन इट वाज मेंशन्ड दैट राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट. तो ये चीजें हुई. दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड. कोई डाउट है तो आप प्लीज जूम पे चैट पे मुझसे पूछिए. आई विल रिप्लाई टू योर डाउट regarding this right to education bill, right to education 86th amendment, 41 and 45, if there is any doubt. Now Raj is asking me, can it be said that it took almost 60 years to implement? It can be said that. ये तो आप खुद ही देख सकते हैं, इसमें मैं क्या बताऊं. सारे फैक्ट्स आपके सामने हैं. कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ और आरटीई कब आया? 1950 में हो गया, 2002 में 52 years तो लग ही गए. सो इन ऑर्डर टू मेक इट अ, बट 1992 में कोर्ट ने तो इसको इम्प्लीमेंट कर दिया था, पार्लियामेंट ने 10 years और लिए. सोचिए जो बात कोर्ट ने 1992 में कह दी, उसको पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने के लिए द पार्लियामेंट टू 10 years. So this is a situation. Go read and research about it. If you don't have any doubt, then write that we don't have any doubt. The interview thing is for all-time education or just for parents of children below the age of 14? Aditi, the interview thing is for all those subjects which come under the Right to Education 2009, which talks about till the age of 14. So you cannot interview the parents of a child before admission or the children before the admission कि सिर्फ solely उस basis पे. अब आप ऐसे क्लास में कॉलेज स्कूल चल रहा है, फिर आप इंटरव्यू ले सकते हो. there is supposedly उनको कुछ personality development का कोर्स करवाना है, so they can take the interview, but it's not like before admission and you are going to deny the admission of the children on the basis of interviewing their parents. Rakesh says St. Michael takes interview of parents. Rakesh, you can challenge it on the basis of RTE Act, but they must have something clause also. अगर वो इंटरव्यू लेते भी हैं तो they cannot like dismiss. अगर उन्होंने किसी का इंटरव्यू ले लिया पेरेंट्स का और उसके बाद उस बच्चे को एडमिशन ही नहीं दिया,
तब जाके वो कोर्ट में चैलेंज कर सकता है. इट मे बी द इंटरव्यू मे बी ऑफ द आई कैन से कैरेक्टर कि आप बच्चे के बारे में जानना चाह रहे हो. द स्कूल में से दैट वी टुक द इंटरव्यू ऑफ द पेरेंट्स इन ऑर्डर टू नो द चिल्ड्रन in a better way so that we can form some plan accordingly and improve the children. So सिर्फ पेरेंट का इंटरव्यू लेकर के किसी बच्चे को निकाल दिया जा रहा है, दैट कैन बी चैलेंज. दृष्टि सेज दैट दिस हैपेंड इन हिंदी मीडियम. राज से बीएचयू भी पेरेंट का इंटरव्यू लेता है. राज, आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ बीएचयू ओनली. आई रेड इन केंद्रीय विद्यालय बीएचयू ओनली, so I know the provision of admission in BHU. Okay, no problem. Goodbye. We'll discuss later. Tomorrow we will talk about 22 and 23 or maybe 24. Bye bye.